Now today, let's start with chapter number 2, Advanced Features of MS Windows 10. Okay, what is operating system? Version of MS Windows. I will tell you in this chapter and how is Windows 10 different from other versions. कैसे थोड़ी अलग है. Working with control panel, कैसे हम date और time को change कर सकते हैं. And desktop background को भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, change. Now, what is operating system? It is a very important part of computer. A computer is of no use without any system. अगर किसी भी तरीके का operating system नहीं है तो computer किसी use का नहीं. It is a software that tells computer how to work and it controls the working of different hardware devices attached to the computer and keeps the record of all the program onto which it's. जितनी भी आपकी हार्डवेयर डिवाइस है वो आपकी कंप्यूटर से अटैच होती है, बताते हैं कि आपको क्या वर्क करना है. And without operating system, our computer will be off. Microsoft Windows, Linux are example of operating system. Microsoft Windows, which is the most popularly used operating system. In this chapter, we will study about Microsoft Windows, which is most popularly used operating system and why it is most important. Because it is GUI, मतलब it is graphical user interface. ये ग्राफिक्स पे बेस्ड है. जैसे आपको कम्युनिकेट करना है तो आप इसमें ग्राफिक्स का यूज कर. इट हेल्प्स अस टू डू मेनी थिंग्स एट अ टाइम. व्हाट इट्स यूज, इट यूज व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट. व्हाट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, द सेम विल बी द आउटपुट. इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली एंड यू कैन इजीली लर्न एंड यूज दैट. Then we have version of MS Windows. We have many versions. Windows 11, it is the most recent version of Microsoft. We have different like Windows 10, Windows 8, which was released in 2012, Windows 7, 2019, Windows Vista, Windows XP. And by all older version of Windows mainly run on the desktop and laptop. And Windows 10 and 11, they are also designed to run on the आपका जो tablet होता है. And we will learn about the Windows 10. अब हम इस chapter में Windows 10 के बारे में पढ़ेंगे. How is Windows 10 different from other versions? Start menu, one of the most important feature of Windows 10 is Start menu. Start menu to open apps, आप Start menu को यूज करते हो. यहाँ पे सारे commonly used folders, files आपको दिखाई. The Start menu of the Windows 10 is a combination of Windows 7 Start menu and Start. जो दोनों का combination है, 7 का भी और 8 का भी. On the left Windows 10 Start menu. Left पे आपका क्या होता है? Menu होता है. And the middle section shows most used and recent apps and programs. उससे ज़्यादा आपने use करें. We can also find File Explorer setting and perform command tasks like starting a program, shutting down. आपको अगर कोई फाइल और फोल्डर को सर्च करना है. To show all the apps installed in the system, select all app option. All install apps or programs are shown here. आपको सारे apps जो भी installed है वो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिखाई देगी. Whereas on the right side of the start menu, Windows 10 tiles, it displays, ऐसे आपको टाइल डिस्प्ले होगी. Without opening app, for example, weather tiles display the forecast. News tiles आपको headline देखो ऐसे tiles होगी. Now other start menu option, change of the start menu including viewing the start menu in full screen mode. Access this option, right click on the desktop. आप personalize भी कर सकते हैं and here you can choose to turn the option. आपको ऑन करना ऑफ करना आप यहाँ से चूज. Then tiles displays the information that are useful at the glance. मतलब बिना एप्स को ओपन करके जो भी इंफॉर्मेशन ग्लांस में वो आपको यहाँ पे टाइल्स में शो कर. ये फोरकास्ट करता है while the news tiles display headlines and move the tiles to make them work better for us. आप रीअरेंज भी कर सकते हो, रिसाइज भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो. Then to rearrange style, if we don't like the way our tiles are arranged to the start menu, what we can do? We can rearrange them. आप जैसा चाहे वैसा उसको rearrange कर. Now pinning and unpinning the tiles. अब हमें पिन करना है, अनपिन करना है. यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप पिन भी कर सकते हो, अनपिन भी कर सकते हो. ठीक है. Click first of all, click the start button, find and right click the desired app. जिससे भी आप पिन टू स्टार्ट करना चाहते हैं आप उसको फाइंड करेंगे. लाइक अगर आप कैलकुलेटर ऐप में करना चाहते हो तो आप पिन टू स्टार्ट कर. यू कैन, अगर आपको अनपिन करना है तो आप क्लिक करेंगे स्टार्ट ऑप्शन पे, फिर आप जो भी ऐप आपको करना है वहां पे जाएंगे और अनपिन.
Then to turn off light tiles. तो अगर आपको light tiles बंद करनी है, you may notice that certain tiles, those for news and weather forecast, they are animated. इन्हें हम light tiles कहते हैं. आप इनको भी क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो. You can turn them off. To do this, right click the desired light tiles और आप इसको off कर. तो आपकी जो light tiles है वो क्या हो जाएंगी, off. We have Microsoft Edge. This is a new browser which is designed to give Windows user better experience on the web. It is faster and more secure and brings lot of new features. It enables to contain a safe and quick search on the internet. It also provides reading mode that opens a web page. ठीक है, it's more secure, better experience देती है. आप different new चीजों को क्या कर सकते हो, find कर सकते हो. ठीक है, easily browse करके आप इंटरनेट का यूज करके browse कर सकते हो. ज्यादा अच्छा experience देती है and it is quick and very fastly used, and what you can do, it display only the text and hiding all other distractions. Graphic image, and Microsoft is meant to replace Internet Explorer. ये किस लिए आया था, Internet Explorer को क्या करने के लिए replace, but still we able to see Internet Explorer अभी हमें दिखाई देता है बहुत computer. Then we have Cortana. It brings Microsoft voice control. ये voice control है Microsoft का, and it makes us easier for interact with devices without lifting a phone. Answer the question what's the weather is. वो आपको सिर्फ बोलना है, वो आपको बता दे. ठीक है, इसमें आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, ये आप वॉइस असिस्टेंट का यूज करके यूज कर सकते. It can play music, games, set alarms, reminds notes, send mails, create manage lists, find files, and place the information to you. To turn Cortana on, click on the search box on the taskbar. आप क्लिक करोगे और उसको आप क्या कर सकते हो, टर्न ऑन कर सकते हो. A setting menu will appear in the right pane and turn Cortana on by moving the slider. आप स्लाइडर को मूव करके सेटिंग में जाकर उसको ऑन कर सकते. जैसे ही आप उसको ऑन करोगे, Cortana क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को गैदर करने लगेगा. जैसे ही आपने उसको एक्टिव करा, वो आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, like this. We can activate Cortana by giving voice commands. Hey Cortana, if we have a microphone attached to the, अगर आपके माइक्रोफोन अटैच है कंप्यूटर में, तो आप वॉइस असिस्टेंट से इसको यूज कर सकते. अगर आपको हाइड करना है, one feature which is not available in the previous version, virtual assistant that can help to create reminder, find files, and but if we prefer, अगर आपको यूज नहीं करना है, आपको Cortana आपको नहीं करना, तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं. लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था. नाउ इट इज देयर. नाउ वी हैव एक्शन सेंटर. न्यू एक्शन सेंटर इज प्रीटी एंड डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वर्जन. इट इज बीन एक्सपेंडेड एंड लेट अस एक्सेस फ्रीक्वेंटली यूज सेटिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी एंड टैबलेट. इट ऑल्सो वेयर वी सी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन. जहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता है, अपडेट्स मिलता है, आप उसका यूज कर सकते. Then we have Window Hello. It is the personal way to sign in to your Windows 10 device. It is new built in biometric security. तरह की biometric security है. ये allow करता है to sign to the system. आप sign करोगे system using data. आप fingerprint, face recognition का use कर सकते हैं. और जो आपको ये पता होगा, जो biometric logins होती है वो बहुत secure होती है, fast होती है, easy to create. It has several features which has made easier to multitask and work with multiple windows at the same time. आप multiple window पे काम कर सकते हो एक ही टाइम. Then we have Continuum. With the rise of hybrid laptop, tablet, Microsoft want to make easier to switch between either. We are using keyboard, अगर आप keyboard का यूज कर रहे हैं, and mouse with Windows 10 desktop mode by default. अगर आपको कीबोर्ड यूज करना है तो आप डेस्कटॉप का यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप मोड का. फिर वैसे आप टैबलेट टच स्क्रीन का यूज कर सकते हो. इफ योर कंप्यूटर ऑल्सो हैज टच स्क्रीन, वी कैन गो इनटू टैबलेट मोड. ठीक है, और टैबलेट मोड में जाके खाली आप टच से भी काम कर सकते. क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन आइकन ऑन द नोटिफिकेशन एरिया एंड क्लिक ऑन द टैबलेट मोड बटन, जो आपका प्लेस होता है कहाँ पे, बॉटम ऑफ द एक्शन से. Now we can use flip to switch between open windows. And what you will do to do this, press and hold the keys of the keyboard, then press the tab. Continue pressing the tab key
and until the desired window is selected. आप जब तक desired window select नहीं होगी आप उसको continue करें. Then we have snap that allows you to resize window quickly, which is especially convenient when we want to see two windows side by side. आपको जब दो window दिखाई दे रही है side by, and it is convenient. एक left पे होगी और एक right पे होगी, and until the cursor reaches the edge of the screen, they release the mouse, the window will snap into place. To unsnap the window, simply click and drag the window down. अगर आपको unsnap करना है तो उसको click करेंगे और नीचे drag करके जाएंगे तो वो अपने आप हट जाएगी. Now virtual desktop and touch view. Instead of keeping everything open on the same desktop, we can move some of the window to a virtual desktop. The feature was not available. Previous window में available नहीं था, and especially it is present in this window, which is very helpful in maintaining lot of window at the same. The task view feature is similar to Flip, but it works a bit differently. To open task view, what you will do, we will click the task view button, which is near the button left corner of the task. ठीक है, आप क्लिक करेंगे, all of our open window will appear and we can click on the choose any window we want. हम जो window चाहे उसे क्या कर सकते हैं, choose कर सकते हैं. Now to create a new desktop, follow the step. Click on the task view. आप task view पे click करेंगे. You will click on the task view button located on the text bar, and the task view pane opens and display the preview of all open windows. Now click on new desktop. आप new desktop पे click करेंगे, एक thumbnail है desktop को वो appear हो जाए. Then step 3, click on the thumbnail to view the newly created desktop. Replica desktop 1, but does not display the application open in desktop. We can open the apps that we use on the desktop. We can group the desktop window by opening similar kind of apps in a one desktop. Similar kind of apps को एक desktop पे use कर सकते. Now click on the text view button again to switch between the desktop. अब दोबारा से choose करेंगे. Now close the desktop. Close the desktop. Open the task view pane and place the mouse pointer on the desktop you want to close. And then what you can do, the upper right corner पे ऐसे आपका close का बटन होता है, आप उसका भी यूज करके desktop के background को close कर सकते. Now we can move an app from one desktop to another. आप app को भी move कर सकते हो. What you will do, open a task view pane by clicking task view button. Place the mouse pointer over the desktop thumbnail. It will display thumbnail of all the open app. Right click on the app that is to be moved. जो भी आपको move करना आप उसको open करेंगे. This will display desktop disk that you have created. Choose the desktop in which you want to move that. Now showing the desktop. If we have lot of window open at the same time, it can be difficult to see the desktop. We can click on the bottom right of the corner of desktop जहाँ पे आपने open window को minimize करा है. हम minimize कर देते हैं. आप इस पे क्लिक करके इसको क्या कर सकते हो, restore भी कर सकते हो. Now working with control panel. The control panel is a system folder using make changes in the appearance and the current setting of the window. System and security, network and internet, hardware and sound, programs हो गए, आपके user account हो गया, appearance and personalization हो गया, clock language reason हो गया, easy to access. What are these? These are the working with control panel. Now these setting control nearly everything regarding looks and works of open control panel. अगर आपको control panel को open करना है, what are the steps I will tell you that you have to follow. पहले आप start button पे जाएंगे, all apps पे click on the window system. Select the control panel. जैसे आप window वाले option पे जाएंगे, वहाँ पे आपको control panel दिखाई देगा. To open control panel, we can type control panel in the search box and then you will press enter. Again, your control panel will be open. Now you have to change date and time. How you will change it? After opening control panel, आप clock पे जाएंगे, language and reason link आपके control panel window पे आप ऐसे दिया हो. A set of options related to date and time, language and reason is given. You can click on the set time and date link under the date and time section. And date and time dialog box appear. Click on the change date and time button under date and time tab. And
ऐसा आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर होता दिखेगा. To change the date, click on the black left right arrow, move the correct months and year. Then select the date you want. जो भी डेट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो. To change the time, click on the up and down arrow next to the clock and click the hour, minutes. सब कुछ आपको क्लिक करना है. To indicate PM और AM value, select them and click on the up arrow. और डाउन arrow अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे से आप कर सकते हैं. नाउ क्लिक ओके बटन. जैसे आप क्लिक ओके करोगे आपका डेट और टाइम चेंज हो जाएगा. नाउ वी हैव टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड. हमें डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है. द पिक्चर अपीयर्स एज अ बैकग्राउंड ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉल. आप किसी भी चॉइस का अपने फोटो लगा सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड से चूज कर सकते हो फाइल को. एंड वी कैन सेट आवर डेस्कटॉप बैकग्राउंड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, पिक्चर अगर चाहते हैं आप कोई भी फोटोज ले सकते हैं अपने विंडोज से. देन वी हैव सॉलिड कलर. कैसा भी कलर, देखो 24 कलर्स हमारे कलर पैलेट में अवेलेबल है. आप जो चाहे वो कलर इसमें यूज कर. आप स्लाइड शो चाहते हैं डिस्प्ले करना. वी कैन डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फोल्डर ऑफ योर चॉइस विद अ बैकग्राउंड इमेज चेंजिंग एज फ्रीक्वेंटली. देखा ना, 1 मिनट में स्लाइड होता है डिफरेंट, 10 मिनट में, 1 घंटे में क्या होता है, आपके जो डेस्कटॉप की जो इमेज है वो चेंज होती है. वो आपकी किससे होती है, स्लाइड शो की. When displaying an image slideshow as a desktop background, we can specify the position of the fill, which is centered on the screen. ठीक है, the image fills the screen horizontally or vertically. Horizontally भी और vertically भी आपके स्क्रीन को फुलफिल करता है और ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन. Now fit, the image is centered on the screen. It fills the screen horizontally and vertically. और ये भी क्या करता है, ओरिजिनल रेशियो को रखता है. And image might not fill the left and right side of the top and bottom edge. Stretch, the image is centered on the screen and fills the screen horizontally. And but लेकिन जो रेशियो होता है वो इसमें मेंटेन नहीं होता. Next is style. The image is in the upper left corner of the screen in original style. Many copies are necessary. And part of the rightmost and the bottom tile must run over the edges. Center, it is center उसकी original size की होती है. Then when you have multiple monitors and connected to the computer, वो image को करता है stretch. When we select a picture position and does the fill screen fit center, the rest of the desktop is filled with the currently selected desktop. To set one desktop background, first what we will do, first step is after opening a control panel, click on the appearance and personalization in the control panel window. Now click on the appearance and personalization link. आप जैसे क्लिक करोगे ऐसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड आपको दिखाई दे. ठीक है, what you will do, you will select the background. जैसे आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करोगे, select the picture option from the background drop down menu. Select the desired picture. या आप ब्राउज भी कर सकते हो. Select the desired picture and click on the choose picture button. जैसे आप पिक्चर को चूज करोगे आपकी पिक्चर चूज हो जाएगी and suitable option choose a fit drop menu appears. And what you can do, you can, now we have to display series of background, desktop background. First step is select the slideshow option. इसमें आपको slideshow option को select करना पड़ेगा and select folder dialog box. ठीक है, click on the browse button. फिर आप browse button पे जाएंगे. Select the folder, click on the choose this folder button. फिर आप choose this folder button को select करोगे. Specify करोगे. Specify the time after you want the picture to change by choosing value. Change picture every drop down. Select suitable option from the choose fit drop down menu. आप suitable option को क्या करोगे, choose. Right? Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.